Hello dear friends, welcome to net classes CS and paper 1. Dear friends, I am Jyoti Kumari Chaube and I am going to teach you TOC. Okay, TOC. हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो मिनी जी, हेलो अभिलाषा जी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने 1 मिनट, लेट मी सी हु इज हियर। Hello, good evening, sir. I was waiting for you. And please, Himani ji, come. And some students are seeing the lectures recording. Okay, so come to the TOC. First of all, we have to do the revision. Fast, rapid revision. Okay, then after we will continue. Manoranjan sir, have you done your revision? Have you done your revision? रिवीजन देखिए, अब हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। मैं चैट के चक्कर में नहीं रहूँगी, नहीं तो बहुत लेट होने लगता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इन इजीएस्ट वे एंड सिंपल लैंग्वेज विथ ज्योति मैम। नाउ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज अ मैथमेटिकल मॉडल। हम लोगों को पता है ये मैथमेटिकल मॉडल है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल टर्म। TOC theory of computation is the branch that deals with how efficiently problem can be solved on a model of computation using an algorithm. We have discussed all these. TOC is in 3 parts: automata theory and languages, computability theory, computational complexity theory. Okay, in automata theory and languages, finite automata, push-down automata and Turing machine is coming, and we are discussing this time we are discussing finite automata, then we will discuss push-down automata, and after that we will discuss Turing machine. And these all things will come in series. Okay, Turing machine, infinite memory, infinite tape or memory. I will underline the main points. Okay, grammar are generated with production rule.
collection of strings that satisfy the production rule is language. A language recognize this language, we have to do the data. Automata. Automata is a computational model that recognize that a particular language belongs to the grammar or not. Okay. Now, what is regular expression? Regular expression we can exchange with रेगुलर एक्सप्रेशन से हम रेगुलर ग्रामर बना सकते हैं, रेगुलर ग्रामर से हम रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. ओके, एंड वाइस वर्सा. इट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन से हम ऑटोमेटा बना सकते हैं, ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ओके, और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और पुश डाउन ऑटोमेटा अलग अलग चीज़ है. आइए हम लोग आते हैं इस पे. हमने देखा था सिंबल क्या होता है और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं. ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, रिप्रेजेंट कैसे होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इससे डिनोट होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग. इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. गुड इवनिंग हिमानी जी, वेलकम. ओके सर, यस, this is very much important, that's why I am repeating daily. If it is not required then you can tell me, I will not revise daily. But union, intersection, difference, these are the operation which we do on set theory, automata, language, grammar. Okay, this is finite state automata, FA, and this is regular in language, regular in grammar. This type of we can see that this is push down automata, context free language, and type 2 LBA, linear bounded automata, CSL, context sensitive language, and type 1 Turing machine, recursive language, type 0, and this is out of Turing machine and recursive enumerable language and type 0. Okay, this is also and also see here regular language, ordering, finite comparison. Here is comparison, this is also a main point. Okay, and context free grammar, LIFO, last in first out. This it act like a what we can say that it acts like a stack, stack. And CSL, one comparison but not LIFO order, more than one comparison, and these all. Okay, and recursive enumerable. Okay, now Hall Turing machine, this is Hall Turing machine. Okay, now come to the expression plus these are the languages. Okay, how finite automata work? String finite automata accept or reject, either it will accept or reject. Now these are transition graphs. Okay, power of string, these are some things. Deterministic finite automata, finite acceptor, finite transducer. Here we are Mille-Murray machine we have discussed, DFA we have discussed, what are DFA, and today we will discuss NFA. Okay, please for 5 minutes keep patience, and after I will start. Okay, so come to the okay, deterministic finite automata, this is initial state, these are final state, this is non-final state. We all have done with this. Now come to the NFA. NFA, what is NFA? For every valid string there exists a path from initial state that reaches to final state. Okay, every valid string means if the string reach to the final state then it is a valid string. Okay, or if it is a valid string then it is
there exists a path from initial state to the final state. Okay, this sentence is also vice versa. NFA covers transitions for all valid strings only in the given regular language. Okay, according to given language, this cover transition for all valid strings. Non-deterministic, NFA, non-deterministic finite automata, means this is not determined, this is not fixed, and non-deterministic with ambiguity. We can think that non-deterministic means not determined, means with ambiguity. It may possible there will be some ambiguities. Okay, now for a single input symbol there are multiple moves. In DFA we have, for single symbol there is a specific unique transition. Okay, there was a unique transition in DFA, deterministic finite automata. But in non-deterministic finite automata, for a single input symbol there are multiple moves. Okay, I will explain you just like this. It is a NFA, and here you can see that this is L self loop. Okay, this is L reach to the other state, this is L, means for only L there are 3 transitions. Okay, and it will help us to show the multiple transitions. Okay, now there is a chance of so many transactions and multiple moves. It take the NFA versatile. Okay, because of this quality the NFA become versatile and easy also. NFA is easier than DFA. And please dear students, remember that DFA is not enough. As we have discussed it, we have only discussed the concept, but the complete practice is remaining till now. So we will arrange practice sessions for DFA also, and if you want to do practice with me, then please chat me personally and we will decide how to do practice. I will definitely provide you practice session also, but you have to let me know that I will start. Okay, now this is clear that non-deterministic finite automata, for every valid string there exists a path from initial state it reaches to final state. NFA covers transition for all valid strings only in the given regular language. Now NFA, these are some rules, some points, some important things about the NFA. And when we know all these things, then it will be very much convenient for us. A NFA, non-deterministic finite automata, is able to be in several states at once. Okay, means there are so many transitions. In DFA there is single transition for a single symbol. Okay, input symbol. But in NFA there are several states and several transitions. Okay, in a DFA we can only take a transition to single deterministic state. In NFA we can accept multiple destination states for the same input. You can think of this as the NFA guesses, means there is 50-50 chance. Okay, 50-50 means it may possible it will be accepted, it may be possible it will be rejected. So NFA, you can think this as the NFA guesses something about input
and will always follow the proper path if that can lead to an accept state. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि NFA में मल्टीपल स्टेट्स हैं तो सारे स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्ट ही हो जाएंगे. वहाँ मल्टीपल है लेकिन ऑल तो नहीं है ना. मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट it is not possible to accept all these strings. Okay, so this is chance of 50-50. It may be accepted, it may not be accepted. Okay, it may be rejected. Now another way to think of the NFA is it travels all possible paths, but it try to accept, okay, all possible path. As how much path are there, the NFA will try all possible path. NFA कोशिश करेगा कि जितना पॉसिबल हो सके हम उसको करें, लेकिन वो कर नहीं, मे भी करेगा, मे भी एक्सेप्ट होगा, मे भी नहीं भी होगा. ठीक है ना, ये सारी बातें हैं. Am I live? Please let me know. Okay. तो ये अगला कंडीशन है. Another way to think of the NFA that it is travel all possible path. It is clear. So it remain in many state at once. यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेट हैं और ऐसा भी होता है कि एक ही स्ट्रिंग बहुत सारे स्टेट पे एक्सेप्ट हो रहा है ना. इट मे पॉसिबल वी आर ट्राइंग फॉर AA. देयर मे बी NFA in which there are two states where AA is accepted. Okay, isn't it? So this may possible. Now as long as least one of the path result in the accepting state, the NFA accepts the input. जितना हो सके, मतलब एक छोटा से छोटा भी पाथ, कोई भी छोटा पाथ हो जो कि एक्सेप्ट करा ले, कोशिश NFA की ये रहती है. NFA is a useful tool. NFA बहुत यूजफुल टूल है, मोर एक्सप्रेसिव देन DFA. ओके, DFA में थोड़ा हम कम एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन NFA में हम मोर एक्सप्रेसिव होते हैं. but we will see that it is not more powerful. Okay, DFA is not more powerful. For any NFA we can construct a corresponding DFA. Okay, हम कोई भी NFA बनाते हैं उसके लिए हम DFA बना सकते हैं. ठीक है. Another way to think that the DFA is how an NFA would actually be implemented on traditional computers. और क्या है, DFA जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है. ये NFA जो है ना, NFA इज कॉन्सेप्चुअल, बट DFA इज इम्प्लीमेंटल. Is it clear? So please remember this slide and write down in your note. Now NFA. This NFA accepts only those strings that end in 0 and 1. अब आप बताइए कि ये डबल है, ठीक है. This is डबल सर्कल. तो इसमें क्या है, दिस NFA accepts only those strings that end in 0 and 1. Means there is alphabet 0 and 1. Okay, the alphabet is 0 and 1
and it start with Q0 state and self loop is here where 0 and 1 both are present, and one transition for 0 is here and one transition for 1 is here. Means there are 3 states. Number of states is equal to 3 and इनिशियल स्टेट पे 0 1 दोनों है. तो 0 1 दोनों जब है तो हम लोगों को मिनिमम कोई स्ट्रिंग लेना है जो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा. तो मिनिमम स्ट्रिंग हम क्या ले सकते हैं? 1 0 1. क्या ये एक्सेप्ट होगा? यहाँ पे हम 1 लेते हैं. ओके, ये वहाँ 1 यहाँ से मिल जाएगा. ये 1 0 एंड 1. हाँ, एक्सेप्टेड. इट इज एक्सेप्टेड. नाउ कम टू सेकेंड स्ट्रिंग 0 0 1. This will be also accepted. And first string will be 0 1. This is also accepted because we will come to Q0. Q0 से Q1 one transition, Q1 से Q2 second transition. It is not mandatory to use self loop in every string. It may be used, it may not be used. इज इट क्लियर? हिमानी जी क्लियर है आपको? मनोरंजन सर, अभिलाषा जी, मिनी जी, प्लीज एक बार बताइए अगर क्लियर हो रहा है तो. ओके, नाउ हम लोग देख सकते हैं 0 0 0 0 1. नाउ आई एम टेकिंग अ length, more length string. So 0 0 0 0 1. This will be accepted or not? This will also be accepted. 0 0 0 0 0 1. Okay, this is also accepted. Now we have to assume a rejected string 1 1 1. दिस ये होगा, एक्सेप्ट होगा क्या? 1 यहाँ मिल गया लेकिन यहाँ 1 यहाँ 0 है. तो 1 1 1. अगर 1 1 1 3 टाइम्स यहाँ आता है तो फिर ये यही रह जाता है और Q0 इज नॉट अ फाइनल स्टेट. ठीक है, 1 1 1 स्ट्रिंग तो बन जाएगा लेकिन Q0 को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा. उसके बाद है 0 1 1. ये एक्सेप्ट होगा. 0 1 1 सेल्फ लूप चलता रहेगा. ओके, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है. ओके, सो हम लोगों ने देखा द स्टेट. इंडियन गेमर जी, oh, welcome Surya Prakash, welcome beta. Try to understand what I am telling here. Okay, welcome very much. So come to the option. The 1 1 1 will not accepted. Why? Because Q0 is not a final state. So this is an string end with 0 1. Check here. It is 0 1, it is 0 1, it is 0 1, it is 0 1. Okay, but here is 1 1 1 1. This will be not accepted. Okay, so this NFA is done for this type of language, this type of string. Okay, now come to the another type of NFA. NFA, non-deterministic finite automata. Good beta, good. So come to Q0. Q0 and we are taking A here, A
and another A, and it is final state. But will the A will be accepted in this automata? No. Why? Because there is a transition, but it is not final state. Okay, non-final state. That's why A will be not accepted here. Now come to another transition. There is also an A, but Q3 is not a final state. Okay, non-final state. ओके, नन फाइनल स्टेट, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ, मीन्स कि ये रिजेक्ट हो जा रहा है. ओके, मीन्स कि एनएफए में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होंगे. नाउ सी, finite set of states, typically Q, as we know that Q0, Q1, Q2 and whole states in a group are called capital Q. Alphabet of input symbol, typically summation. Okay, one state is the start initial state Q0, 0 or more final accepting state, the set of type F. A transition function, transition is the function, takes a state and input symbol as arguments, return a set of states. ये क्या करता है? एक सेट ऑफ स्टेट्स रिटर्न करता है आपको. ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स रिटर्न करता है एनएफए इंस्टेड ऑफ सिंगल स्टेट. A DFA, okay, return a set of states instead of a single state as a DFA. यहाँ पे क्या होता है? DFA में एक सिंगल स्टेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स मिलता है. AFA is presented as the 5 tuple. 5 tuple we know that from the DFA. ये स्टडी बेटा नेट की है. नेट जब हम मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद जो नेट करते हैं उसकी स्टडी है. इंडियन गेमर सूर्य प्रकाश. ओके बेटू, सूर्य प्रकाश चौबे. लेकिन आप लोग भी इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं. दिस इज अबाउट द ये. नाउ कम टू दिस ट्रांजिशन इज आल्सो रिजेक्टेड. नाउ कम टू the another thing, regular languages. Regular languages accepted by finite automata. Okay, earlier we have discussed that regular languages accepted by finite automata, and finite automata is of two types, DFA and NFA, and each language which is accepted by DFA can accepted by NFA. अब ये क्यों है? ईच लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए. अगर डीएफए में कोई चीज़ एक्सेप्ट होता है तो वो एनएफए में भी एक्सेप्ट होगा. अब इसका रीज़न क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास एक बास्केट है. ओके, देयर इज अ बास्केट. दिस बास्केट इज फुल ऑफ फ्रूट्स. Okay, there are so many fruits are there. This basket is full of fruits. Now if this basket belong to my table, if this basket is on my table, then can we say that the fruits are on table? Okay, the fruits are in basket. Okay, fruits are in basket, and basket is on table. Okay, basket is on table. Then can we say that fruit is on table? अब इसमें क्या है कि डीएफए में है फिक्स
और स्पेसिफिक यूनिक ट्रांजिशन फॉर ईच सिंबल। तो वो यूनिक ट्रांजिशन जो ईच सिंबल के लिए है डीएफए में, एनएफए से वो हट तो नहीं जाएगा। एनएफए में हम ट्रांजिशन मल्टीपल ट्रांजिशन ला रहे हैं, लेकिन डीएफए में जो ट्रांजिशन था क्या वो हम हटा देंगे? नहीं हटाएंगे, है ना। मान लीजिए ये बास्केट है, इसमें फ्रूट है, तो ये बास्केट में था, ये डीएफए हो गया, ये डीएफए हो गया, लेकिन ये टेबल एनएफए हो गया। टेबल पे और भी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें भी हैं, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, सारा सेटअप है मेरा, लेकिन यहीं पे मैं वो बास्केट भी रख दूं तो टेबल क्या है? एनएफए है, वहां और भी ट्रांजिशन है, लेकिन फ्रूट्स वाला बास्केट भी है। जस्ट लाइक दैट डीएफए में है, बास्केट में है, केवल फ्रूट है। तो ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Each language which is accepted by DFA can accepted by NFA। और ये मत भूलिएगा, ये एग्जाम्पल मत भूलिएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट sentence. It may possible it will come just like a sentence in our exam, okay? And regular language हो गया, ये हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं NFA के बारे में कुछ बात करती हूँ। I will talk about NFA. What is NFA? NFA is a hypothetical model. Hypothetical model. Okay? NFA is a hypothetical model, means कि वो हम assume करते हैं, वो रियल में नहीं एग्जिस्ट करता है, मीन्स यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन DFA इज प्रैक्टिकल, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। नाउ वी कैन सी दैट this I will explain in detail. Power of DFA is power of NFA. So this is about NFA. NFA hypothetical model, non-deterministic finite automata. This is powerful tool because there are multiple transition and this is versatile. Okay, that's why it is powerful. No, not trap state. Trap state is not there. In DFA there may be a trap state because I will explain it in detail, but in NFA there is no trap state. Trap state is that from where we cannot return back. Okay, less restrictions, there are less restrictions in NFA. Easy to design, less restriction, that's why it is easy to design. Conceptually a conceptual thing है, this is hypothetical, that's why it is conceptual. 50-50 may or may not be accepted by the language. Okay, we have discussed already. Now DFA is practical, actually it is implemented. Okay, implementation done. NFA is a subset of DFA. Why? Because DFA is practically used. In DFA we take the power set of NFA. Okay, now come to the power set. What is power set? Power set, if A is here, A set is here, 1 2 3. Now power set, what will be power set? This is from set theory. Okay, this is from set theory. So power set, in power set there will be a phi according to set theory. 1
single one. It is an element. 2, 3, element 1, 2, 1, 3, 2, 3 and 1, 2, 3. ठीक है. अब इसमें हम 3, 1 और 2, 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना है. ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट A इज नॉट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो A है सेट एलिमेंट 1, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, बट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट है इट इज हैविंग 1 एलिमेंट. ये जो कर्ली ब्रेसेस हमारा लग जाता है उसकी वजह से उसके अंदर जो भी चीज़ है वो एज ए एलिमेंट काउंट होता है, एन एलिमेंट काउंट होता है. मीन्स द सेट हैविंग 1 एलिमेंट. ओके. 0 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट. ओके. दिस टाइप. नाउ सो एनी सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ इट्स पावर. तो क्या होता है कि कोई भी सेट जो होता है वो अपने पावर का सबसेट नहीं होता है. कोई भी सेट ए वो अपने पावर सेट का सबसेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 है और ये एन एलिमेंट विथ 3 एलिमेंट, एन सेट विथ 3 एलिमेंट. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं. ये एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए. अब हम देखते हैं NFA से DFA कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है. If n states are in NFA, then it may possible 2 to the power n states in DFA. 2 choices are there, Q0 A accepted and it is rejected. It may possible कि one string is accepted in NFA and there is another path where this string is not accepted because there are multiple transitions and multiple paths are there. So here it is accepted, here it is rejected, but at least one path, at least one single path where the element is the string is accepted, then this language is accepted by this automata. Okay. If any confusion, please let me know. Now first choice, alphabet A. Here we are taking A. A is going to from Q0 to Q1, but Q1 is not final state, that's why it is rejected. Alphabet AA. Here A is going to Q1, Q1 से Q2 पे दूसरा A जाता है and this is accepted. Okay. Now this is accepted. तो हम लोग कुछ स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं. All the input string is processed and the automata is an accepting state, is in an accepting state, then this is accepted, this automata is accepting the language. And NFA rejects a string if there is no computation of the NFA that accepts the string. ठीक है. अगर NFA रिजेक्ट करता है कि स्ट्रिंग को और अगर कोई कंप्यूटेशन नहीं है ऑफ द NFA दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, अगर ये रिजेक्ट करता है एंड NFA रिजेक्ट्स अ स्ट्रिंग, इफ देयर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ द NFA देन दैट द एक्सेप्ट द स्ट्रिंग. ओके. For each computation, I will explain it tomorrow. Okay. I will explain this point tomorrow. For each computation, all the consumed, and here is something missing, and the automata is at non-final state, or the input cannot be consumed. If मतलब ये पूरे का कहने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग हम डालते हैं, पास कराते हैं उस ऑटोमेटा से
और वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचता है तो वो रिजेक्ट है और उसका लैंग्वेज भी रिजेक्ट है. और इफ एन NFA इज एक्सेप्टिंग ए स्ट्रिंग इट मीन्स दैट देयर इज ए कंप्यूटेशन ऑफ द NFA. ये कंप्यूटेशन है. इफ एन NFA रिजेक्ट्स ए स्ट्रिंग इफ देयर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ द NFA. ओके, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मैंने समझ लिया. मैं ये कल नहीं एक्सप्लेन करूँगी, अभी कर देती हूँ. एन NFA रिजेक्ट्स अ स्ट्रिंग. कोई NFA है वो रिजेक्ट करता है कि स्ट्रिंग को. इफ देयर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ द NFA दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, मतलब कि जो एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो एक्सेप्ट करे स्ट्रिंग को वैसा कंप्यूटेशन ही नहीं है NFA में. कंप्यूटेशन नहीं है मतलब वो ट्रांजिशन नहीं है, वो पाथ नहीं है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. मैं खुद थोड़ा हो गई थी, मतलब सेंटेंस को पढ़ने का वे चेंज हो गया था. फॉर ईच कंप्यूटेशन ऑल द डैश इज कंज्यूम्ड एंड द इट में पॉसिबल सिंबल और स्ट्रिंग एनीथिंग. द ऑटोमेटा इज a non-final state. Okay, now check that AAA there is 3A and the NFA which accept the language is the accept the string is AA double A. So this is rejected here, this is also rejected. Okay, in both the path it is rejected. Here is AA, this accept the. अगर यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा देते ना तो ये एक्सेप्ट हो जाता. ठीक है, लेकिन ये सेल्फ लूप नहीं था इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया. ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, इस तरीके से होता है. फिर ये तो वही है. देखिए यहाँ 2 चॉइसेस हैं, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों से रिजेक्ट हो जाता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आज थी. आज के लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें थी और क्या है कि थोड़ा मैं थोड़ी व्यस्त थी, कुछ एक्स्ट्रा काम आ गए थे, इसीलिए आज का लेक्चर 15 मिनट कम है. लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू रिवीज़न. and see the previous year question of automata and try to solve it. If you are able to solve then it's okay, but if you are not able to solve then we have to plan another practice sessions. Okay, and in tomorrow session we will discuss NFA, much more examples and operations, and then we will see that how to convert DFA in NFA, NFA in DFA, and in languages, in grammars we will learn so many things. But for today it is done, and if you like the lectures please hit the like button. If these lectures are useful then please share the lecture, and if you are not subscribed till now then please subscribe it. Okay, we will meet tomorrow at 9 PM with much more TSC concept and TOC previous year question. If you are feeling, thank you Vivek sir, thank you very much. If you are feeling any problem in lectures, any requirement is there, then please let me know.
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए। और टीओसी में जितना भी हमने अभी तक किया है उसको कंप्लीट कीजिए और रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और देखिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम प्रैक्टिस सेशन अरेंज करेंगे, ठीक है। थोड़ी मैं व्यस्त थी, कुछ काम एक्स्ट्रा थे मुझे, इसलिए स्लाइड्स आज थोड़ा 10-15 मिनट कम मतलब लेक्चर चला है, तो उतना समय नहीं मिल पाया मुझे ये सब कुछ प्रिपेयर करने का, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन हम कल इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, और अच्छे से करेंगे। और अभी तक जो हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। सो ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।